दोस्तों कभी सोचा है कि मूवीज में जो हाई स्पीड बोट्स दिखाते हैं उनको चलाना कैसा लगता होगा। आज मैंने वही किया। आर्टिक के ठंडे पानियों में मैंने चलाए जोडियक, वो भी 100 की स्पीड पर, और इसका मजा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बस इतना ही नहीं, आज हमने बड़ी सी शिप रोक के आर्टिक के बीच में ड्रोन उड़ाया, आइसबर्ग देखे और पोलार बेयर को ढूंढने की पूरी कोशिश करी। और जब शाम हुआ तो हमने सनसेट में एक धमाकेदार डांस किया। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिक सीरीज डे 5 पार्ट 1 ओनली ऑन विवेक जसवाल व्लॉग्स। तो सुबह के 6 ऑलमोस्ट बज गए हैं एंड हमको 6:50 नहीं ऑलमोस्ट 6:15 हो गया। 6:15 को उठ के हमको ऊपर योगा एक्सरसाइज के लिए आना था। हम पहुंच गए। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैंने टेम्परेचर देखा नहीं है बट लग तो रहा है कान में अच्छा खासा। तो ये थोड़ा सा व्यू है, थोड़ा सा बर्फ वगैरह दिख रहा है। वो इसका टॉप इनको स्ट्रेट। तो मतलब इस टाइप का जगह हो गया है कि हम बीच समुंदर में चल रहे हैं। मतलब अलग ही फीलिंग भाई, ऐसा अलग फील रहा है जैसे क्या बोलूँ मैं। सो के उठा फिर दिमाग भी नहीं चल रहा। लेट्स गो टॉप या हेलो। Welcome to the day 5 of Arctic Expedition vlog and official good morning। तो योगा वगैरह थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह हो गया। अब हम जाते हैं मेस में, कुछ खाने का देखते हैं एंड उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। 8:15 को गैदरिंग है, तब वहाँ शायद ऊपर ही जहाँ पे अभी हम थे वहाँ जाके मिलना है। फिर आज का ये लोग बताएंगे क्या क्या काम होगा, पॉड एक्टिविटीज़ की क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या पॉड एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है। तो अंदर चलते हैं। तो सामने फ्रंट में जा रहा हूँ, पाइन में जा रहा हूँ, पाइन ऑफ द शिप, एंड वहाँ से हम देखते हैं कि कैसा दिखता है। मोस्ट प्रोबेबली शिप या बोट के सामने में जो लहर होती है वहाँ पे ना इजी रहता है इनके लिए स्विम करना। तो फ्रंट में ऐसे कूदते रहते हैं, वो आप देखे होंगे नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में। तो यहाँ सब पहले से ही आ गए हैं। ओह that's cool। Watched him in the yard and wonder how the world still feels that way. Skinned knees and open skies, no fear behind their eyes. Hold up, when did we grow up? तो आज का तो दिन बन गया भाई। सुबह से डॉल्फिन देखी, अब और कुछ खास नहीं चाहिए, बस अब ऐसे ही दिन स्मूथ चलता जाए। तो जाते हैं मेस की तरफ। आज का ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ है, पोटैटो टोस्ट और एग। ये दूसरी टीम है, पॉड है जो आज खाना सर्व कर रही है। मे बी नेक्स्ट पॉड हमारा हो सकता है, अभी पता नहीं है उनको। They are actually turning in। यहाँ आप देख रहे होगे, धीरे धीरे आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ा बोट है ना, मूव कर रहे हैं। Let's go to the top। Yeah। The water seems so close। Yeah, and also I think it's a stop kind of thing। So what? We'll be getting off the boat। We'll be getting off the right now। I can find my way home। Massive. Ooh, cool. That's your bigger lens। This is the big lens, yeah. Shit। How much zoom does it do? I'm not sure. 400? 400. 400? Goes to 400. Rosie's goes to 600. Camera or And it's telescope? Yeah, seriously. So almost 8 बज गए। अब ब्रीफिंग का टाइम हो गया, सब अंदर जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए हैं। Okay। Look at me having makta. Okay। How large is it fish? No, that's not fish. Wait, hold on. We killed a dolphin. Oh, that's a dolphin or a shark? It's a dolphin. And I was eating it here. Look. Wait. I was eating it there. And where did you cook it? On the land, right? No, that's raw. Oh, okay। Oh, not You eat that. yeah, you fish a lot, I guess. Yeah, I love fishing. Yeah. That's ikaluk. Mm-hmm.
in my language, Ikaluk is a Arctic char. Okay, Ikaluk. 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 Huh? Ikaluk. 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 Yeah. Ikaluk. Okay. Ikaluk. Ikaluk. Yeah. I'm getting hang of it. Yep. Yeah. Do you know, like a sheep, you get rid of all the fur and you make something? Yeah. I wanted to do that with my dog. Oh my, really? I'm not sure does it work or not, but I wanted to do that. You wanted to skin your dog? Yeah. Really? But it would look cool, I guess. But my dog didn't like it. He was always running whenever I have my shave. Oh my god. Oh, like take the fur off. Yeah. Oh, I thought you meant like kill him. No. It was my baby. How can I kill him? I know. Inuktitut. Yeah. Inuk is a person. Oh, okay. Yeah. So our Oh, I thought language it's is a region. Inuk is a region and No. Inuktitut is a language. Inuk is like my ethnicity. Okay. I'm a Inuk person, meaning one. Inuit means more than one. Okay. So if it's a group, they will say I'm an Inuit. No, yeah. If I'm talking about myself, I'm Inuk. Okay. If I'm in a group, we are Inuit. Okay. यहाँ पे आके अपन अपना DFD उठा लेते हैं. Oh, thank you very much. शॉटगन इन्होंने रखे हुए जस्ट इन केस अगर पोलार बियर आ जाए तो. I was saying through the camera, like we have shotgun just in case any animal comes around, a big animal. Yeah, any animals from bears or anything that Which disturbs. yeah, keep them away. Right. We don't shoot. We don't Oh yeah, for sure. kill anything on it, but we use bangers and stuff. Yeah, like just a sound maybe. Sounds, yeah. Okay. Video footage can you store on one of those things? I have 250 GB here. My 512 GB is corrupted now. So I again have a 256. Oh, it got wet. Yeah, it's corrupted. It has data, I guess. Yeah. But once I go back to auto, I can retrieve it. Oh, that's good. I have 5 TB of hard disk. Yeah. And 5 TB online. Bridge, this is Zodiac 2, 5 people POV, including driver. When you say POV. People on board. POV. PV, not V. That's why. What's POV? Here, I'll get this out of your way. That's mine. That's just the steps of it. We'll play a little show and tell. Pass it around, everybody gets something. Yeah. Okay, flares, mosquito, gasoline. Does this water motors, if we do it in the air, does it like does it become hot very fast? It's still sucking. Well, if you do it right out in the air, yeah, because it's cooled by water flowing through it. Okay. And that's one of the things you always check. See this little spout of water? Right there? See the spout of water shooting at the back? That's flowing through the engine. That's critical. If you don't see that, that means your engine's not getting cool for some reason. There could be a clog or something like that. And you're gonna burn up your engine. Looks like you're gonna fall back.
Put this on your wrist. There you go. So this is the gear shift. That's it. Good position. You gotta pull it forward. Watch where you're going. There you go. Now you're heading us back to the river, right? Just turn it around. Nice. Raises the hands, doesn't it? Yeah, yeah. Nice. Woohoo! Yeah, baby. Okay. All right. So slow it down, nice and slowly. Watch. There's a big stern wave that comes up when you shut it off fast. That's okay. Put it in neutral. Take the safety off. All right. Then go have a seat. Okay. Thank you, Jacob. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आर्टिक के बीच में मैंने कैसे ड्रोन उड़ाया और रात की पार्टी कितनी धमाकेदार रही। मिलते हैं डे 5 पार्ट 2।